Now I think so. People can quietly hear me, but yeah, it actually sucks when things don't go in your favor. My laptop is not charged; it is 30%, and we have to do 30 to 40 minutes of live streaming. And so, hello everyone, I'm Ankit Dubey. One second, let me just fix it and just make sure. अबे यार वो I'm doing यार क्या कर रहा हूँ मैं यार I'm just get irritated by what I do. Yeah. चलो भाई relax. So what I'm doing is today पहले तो बॉडी का अपडेट दे देता हूँ. बॉडी का अपडेट ये है कि आज चेस्ट ट्राइसेप जस्ट में मार के भी आया हूँ. और बात ये है कि uh, as yesterday's stream पे हम लोग ने भी reached to 98 problem, and today we are actually aiming to solve only one problem because tomorrow what I am thinking to do, as I've said in the earlier stream, that we are going to solve hard lit code problem at which will be considered as our 100 problem of lit codes. And so that's what we are aiming for. And I'm thinking of it in a way like today if the time is very less, the the laptop is not charged, it will not going to run for at least for 1 hour or 1.5 something like that, so it's not going to work, it's not going to run, it will switch off basically. So what I'll do instead is that we just do 30 minutes of streaming, and we'll just solve one question and one chess game. And because today itself in the practical I played 4 matches, and 2 matches I won and 2 matches draw. And just before this gym I played one game again, and then I lost it very brutally because that guy was absolutely very smart and made very good moves. And so what so just what I feel completely is that never ever be patient. That's what I'm thinking, because today 5 games was absolutely something which was not needed because I won 2 matches, and the streak was absolutely something which was good. And the my ranking was around the IQ, you say IP or IQ whatsoever it is said. So it was around 363. So it was pretty much good, but apparently this last game I lost. It goes minus to around minus 35 something like that. So it was not a good thing, but that's what you understand from your mistakes, and you always try to not to implement it again in the future. So that's what I am aiming for. But back to the topic. Today we are going to solve one easy problem, and because we don't have the time, we don't have the system properly. So and I thought ki today we should take a break, but in order to maintain, because if I would just do it, do a break today, it's just mean a 4 stream only. And if I would be not consistent in this 4 days, or in the 4 week, in a single week, then this is kind of a thing. Then it's not good for me. So that really shows ki I'm very impatient. I'm just not consistent enough. I'm just not dedicated enough. But I will. So that's why, because of this, I came just for the 30 minutes. We'll do the stream, but let's go. It's already 11 minutes, and now क्या लगता है, मतलब आपको मैं सॉल्व कर पाऊंगा आज? एक क्वेश्चन तो करना ही है, और प्लस एक चेस का गेम. होपफुली इफ लैपटॉप
would be charged enough, then we'll do it. Otherwise, we won't do it. Or भाई साहब यार hmm Ankit, Rita, anti-gravity, bash और यार अभी फ़िलहाल मैं आज जेएनआई का भी कोर्स कर लिया हम लोग को कॉलेज के द्वारा मतलब कॉलेज के थ्रू हम लोग को प्रोवाइडेड रहता है कोर्स प्रोवाइड रहता है it was basically cloud but I thought it of doing it in Chechnya because I know this MLNDL very well. All right. So the next step, usually people would take it to the GenAI, LLMs, and all that stuff. So that's why I choose GenAI. But cloud is actually something which everybody should know about. But it's not a huge topic, and we can cover it any day, anywhere. So it's not a huge topic. It's not something that is very complex, you can say. But it absolutely has a huge implementation when it comes to working in an office and something like that. So that is okay, but we choose Genia over the cloud, and which is apparently I think is a good decision as an DL expert. Not an expert because I have implemented twice only DL, the neural networks, and in the forest fire prediction. But in the forest fire prediction, I used the REST data set, so that was absolutely something which is a huge this idea for ये कौन सा स्क्रीन आ रहा है यार मेरे को चेस का स्क्रीन नहीं दिखाना अभी फ़िलहाल हाँ तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले क्या शो कर रहा है भाई कुछ और भी नहीं शो कर रहा है ना ब्रो हाँ पूरा ही शो कर रहा है ऑलराइट तो ठीक है हम लोग अभी करेंगे 2 पॉइंटर्स का हम लोग कर रहे थे ना तो 2 पॉइंटर्स इजी लेवल के ही करेंगे बिकॉज वी नॉट नाउ इन स्टेज की जहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाकी असाइन कुकीज़ अरे हाँ रिवर्स स्ट्रिंग हम लोग ने सेकंड वाला करना है हम लोग करते थे पहला वाला हम लोग ने किया था given a string as an integer k reverse the first k characters for every 2k characters counting from startup. Given a string as an integer k reverse the first k characters for every 2k characters counting from start of the string. If there are few then k characters left, reverse all of them. If there are less than 2k but greater or equal to k characters, then reverse the first k characters and leave the others original as original. I'm not. Yeah, this is confusing, यार. I just need to understand it because right now I'm in that stage just में जिनसे आया मेरा दिमाग उस तरीके से चल नहीं but in order to just maintain the stream we thought कि today we would not going to do the stream but as we have maintained a goal plan a goal we have to do consistently for 15 days and then we will buy the pen tablet which will be something pen tablet or maybe webcams. I'm thinking what do you guys think yeah webcam or which is more better. Webcam mostly it cost around yeah something like that like Zebronics का अगर हम लोग लेने जाए तो it cost around 15,000 1,500 something like that so it's good it's and for the pen tablet we thought we had a budget around 3,000 not a budget but it goes around 2,400 or 500 something like that so this one not this one we are thinking we are going to take the XPP pen tablet hopefully this one mostly but the size it depends yeah size भी देखना हाँ इस इसमें भी साइज जो अवेलेबल है अमेजोन का था ना हाँ so this one
इसमें भी साइज का इशू है कुछ, तो 10 3 इंच ऐसा कुछ तो बता रहे इसमें। हाँ 6'4", तो 4'3" इज एब्सोल्युटली वेरी स्मॉल, मतलब इट वुड गोज अराउंड, इट इज एब्सोल्युटली समथिंग वेरी स्मॉल हो जाएगा वो, बहुत ज़्यादा। कोई फोटो डालेगा, अपलोड किया है कुछ? 4'3" is very small, very small. 4'3" is absolutely very small, yeah. This one is 6'4", something maybe. 6'4" is a huge. 6'4" is absolutely huge, and it is very good also. It looks like huge. 6'4" is actually huge. So huge, मतलब it's normal basically. It's more than an, explain this in simple words. मैंने अभी आपको अपने रेपोज ये सब दिखाए नहीं अभी अच्छे तरीके से, बट विल गो थ्रू दैट। बट ये सब आप मेरे रीड कर सकते हो, मैं अपना गिटहब अभी तक प्रोवाइड किया नहीं यार, एक बार डिस्क्रिप्शन में विल डू इट आफ्टर द स्ट्रीम, बिफोर ड्यूरिंग द स्ट्रीम कैन वी डू इट? ड्यूरिंग द स्ट्रीम इज इट पॉसिबल टू, 1 second यार, is it possible to update ओ प्रिजन लाइव स्ट्रीम पे ही था। ठीक है, will mostly think about it, but this thing is the thing of this is a flip and escape rule. You're walking through a string in a chunks of 2K characters, and every chunk you only care about the first half. Here is the background of how it works. भाई जो भी बता रहा हो यार, मेरा भी मूड कर ही नहीं रहा है कुछ, बट ठीक है, we'll play a quick 10 minutes game and then 1 सेकेंड, अभी मैं ज़रा अपना चेस वाला स्ट्रीम ऑफ करके चेस वाला चल रहा है। A quick chess game we're going to play now, because छोड़ो यार, अभी रीजन क्या ही दूंगा, let me just get through it by it's not going to be turn out be a good day by apparently, अगर मैं बताऊँ तो, अगर मैं बोलना चाहूँ तो it's not going to go good यार। क्या कह रहा है भाई बंदा? कौन भी नहीं ध्यान में भाई, अगेन ये क्या हो गया इस बंदे को भाई? बॉडी करना है, बॉडी करेगा ये, मैं लिख के दिखा भाई, ये बहुत टाइम है, बहुत टाइम वाला, अब ये बॉडी देने वाला है भाई, जेन्युइन भी बता रहा हूँ।
इतना लूज ही कर दिया था, मैं थोड़ा सा अपने अच्छी मूव खेल लूँ। अरे यार शिट यार, मैंने लूप तो नहीं लिया उसका। अबे यार, लूप क्यों नहीं लिया था यार मैंने भाई, यही होता, ब्लेंडर हो जाता है भाई। एक टाइम के बाद मैं आप भी ब्लेंडर कर ही देता हूँ, मतलब ये तो दिख गया है मेरे को भी। अब मैं क्या ही करूँगा। ठीक है, व्हाट वी अज्यूम इट टू बी, बैक ही लाना ज़्यादा होता है। इसके ये बॉन्ड को खाना ही पड़ेगा भाई, ये पॉइंट डेंजरस है। ट्रैप हो गया यार मेरा ये। हाँ भाई, ये भी ट्रैप हो गया। मैं भी लेकिन क्या करूँगा मैं उसको। अगर वो इधर से रूप को इधर किया आपने तो फिर बेटर है उसके लिए मूव, क्योंकि मेरा ये ट्रैप हो चुका है। ये पोजीशन में जा नहीं सकता, ये पोजीशन भी मेरा ऑलरेडी, मैं ट्रैप में हूँ, इधर मैं जाऊँगा नहीं। अरे यार, तो ब्लंडर ही हो गया भाई मेरा बहुत। चलो अबॉर्ट करना ही था इसका, तो अबॉर्ट तो किया बंदे ने कम से कम। तो वी वुड प्ले अनदर चेस गेम, व्हाट डू यू गाइस। नो भाई, नो ब्रो, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। The charge is now 19%. We can do 1 second, but let me check it यार। वो स्कोर कहाँ दिखता है भाई कितना? What's my status now? What's my status now यार? Profile. Where do you see the scores यार? Where do you see the score यार? Where do you see score my score यार? गेम प्ले भी दिखता है क्या? नहीं, नोटिफिकेशंस, अकाउंट्स, नो। 1 second संजय। 1 second यार, I was texting someone यार। तो 1 सेकंड यार। असाइन कुकीज वाली क्वेश्चन देखते हैं पहले। yesterday यार हम लोग ने ये भी एक समझा ना, हमारा वर्टेक्स है या नहीं, रिवर्स रोल्स नहीं यार, हमारा एक और यार
डिफाइनिंग टू पॉइंटर्स नहीं यार, क्या था यार, कोई तो एक और हमारा सन था, शायद चैट के अंदर होगा मे बी सब चैट्स में। But yeah, assign cookies, yeah. Assume you are an awesome parent and want to give your children some cookies, but you should give each child at most one cookie. Each child I has a greed factor, has a greed factor GI, which is the minimum size of cookie that the child will be the content will be content with. भाई छोड़ो यार, आज नहीं हो पाएगा अभी मेरे से। मैं मोस्टली शायद रात को मैं वापस से स्ट्रीम कर सकता हूँ, मतलब इफ मेरे को सब चीज़, इफ एवरीथिंग गोज वेल सो वी वुड डू इट, बिकॉज अगर आज लेट कोड के हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे इट वुड बी नॉट गुड फॉर। तो ये तो बंद करो एक मिनट ज़रा चेस का। अब इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, एक सेकंड बस। तो अपेरेंटली आज का स्ट्रीम सच में बहुत ज़्यादा घटिया गया है, और घटिया जाने का कारण भी है, मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। सो वही होता है कि जब मन नहीं करता, इफ़ यू डोंट हैव द विल इनफ टू डू इट, सो डोंट डू इट। बट स्टिल आई डिड इट, एंड आई वोंट अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट कि मैंने स्ट्रीम की अपने बातें एक्सप्रेस की, एंड आई डिड अ स्ट्रीम, एंड इट शोज की कंसिस्टेंसी है, ठीक है, यूट्यूब एल्गोरिथम को एक कंसिस्टेंसी दिखी, दैट्स व्हाट is needed. That is the something which is optimistic thing about the about being consistent. Even if you even if you is very less, is not up to your daily routine, but if even if you do it, then it's fine, it's more than enough. So that's what I'm thinking of it. खैर कभी कभार ज्ञान ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा। मतलब आज के टाइम पे अगर आप ज्ञान दे रहे हो तो इट्स लाइक आपको ज्ञान ही है, नहीं तो वो सब इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट they are doing, everybody knows what they have to do, and everybody knows how will they do it. All right, so it's just a matter of execution, and it's just a matter of mindset. Everybody has the mindset, everybody has the internet, everybody scrolls, and all each and everyone has the information, the all information about. All right, so खैर अभी तो स्ट्रीम मेरी बंद होगी जी, बंद करूँगा ही मैं 5-10 मिनट में। मेरा चार्ज भी इज़ अराउंड 10%। एक सेकेंड, चार्ज भी मेरा अराउंड 10% हो चुका है। तो मेरी बात ये हो रही थी कि क्या बोलते हैं, फ़िलहाल अभी जैसे कि सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा वर्स तरीके से हो रही है, जियो पॉलिटिक्स है, मतलब मैं जियो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते आ रहा हूँ, और मेरा इसका एक सेकेंड ज़रा मैं स्क्रीन अपना बंद कर दूँ। स्क्रीन में अपनी बंद किया हूँ अभी फ़िलहाल। अब रुको मैं वापस से ऑन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो ये मेरा बोलना कि अभी जियो पॉलिटिक्स में बहुत टाइम टाइम से, मतलब क्या, मतलब एवरीबडी शुड फॉलो इट, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ, मतलब ट्विटर्स, रेडिट्स तो बट ठीक है, वी डोंट रिलाई ऑन रेडिट बिकॉज रेडिट्स इज सम टाइम, बट अपडेट अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए, अपडेट किसी भी चीज़ का, और एक व्यू पॉइंट चाहिए, सो रेडिट इज़ एब्सोल्युटली समथिंग राइट प्लेस, बिकॉज एक फिर भी एक इंटेलेक्ट लोग आते हैं, मतलब ट्विटर में तो फिर भी आपको फालतू लोग मिल जाएंगे, बट रेडिट पे it's very less user, very less number of people knows about the Reddit, and very uh, not the intellect people, I'm not going to say, but they have the good humorous as well. So there, and if someone has a good humorous, I would say he or she is kind of an intellect as well, because humorous comes with your intellectual as well. Doing comedy is not an easy stuff, so एज ऑलवेज हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर देते हैं, मतलब मैं कर देता हूँ, आप तो क्या ही करोगे, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो वन वाचिंग मी, बट वी हैव टू प्रिटेंड इट, दैट्स व्हाट द एम इज ऑल अबाउट। सो मेरा ये कहना है कि जियो पॉलिटिकली सिचुएशन इज एब्सोल्युटली वर्स, एंड आई होप, आई वुड जस्ट से वन थिंग, व्हाट फॉरेन मिनिस्टर हैज ऑलरेडी सेड इट,
the sustainable humanitarian के लिए जो भी requirement है that should be need to be fulfilled. And what I really thought and what I really think in the 21st century and the 2026, and what I really thought कि if an even a nation, any nation needs to have a best national security. That is the must thing. That is absolutely something which is very prominent, which is very significant, because if you don't have the national security uh, in a good way, in a very nicest way, in a very better way other than your neighboring countries, then one day or the other day you will be captured or you will be ruled by someone else, because power holds words, and power really matters a lot in the 2026. And that's what USA and USA intelligence has did, and what that's what Mossad intelligence had did. They have the good power, they have the good sources, they have the good data. It's not about the warfare is not completely about that missile एक दूसरे पे लॉन्च कर देना और बाकी सब चीज़ें करना. Warfare का is type of wars is absolutely different. And right now we have been living into the जो लोग इस टेक्नोलॉजी पे चल रहे, मोसाद जैसे इंटेलिजेंस और CIA जैसे इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि बहुत क्रीजी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एंड दैट इज गुड इनफ. सो पावर एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी है. और नेशनल सिक्योरिटी आप अपना प्रायोरिटाइज करो. इकोनॉमिक्स पे आप ठीक है, आप यू कैन fix on it, but national security is apparently something which is very important, because UAE मतलब यूएई के पास भी बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी अच्छा है, बट एट द एंड इट इज़ जस्ट अवॉइडिंग, बिकॉज ईरान से तो बेटर नहीं है फिलहाल. फिर भी देखा जाए तो वही है, नेशनल सिक्योरिटी तो बेटर ही रहनी चाहिए. उनकी टूरिज्म पे हमला कर दे रहा है, देयर इज नो रिटेलिएशन, बट ठीक है, दैट इज फेयर इनफ, बिकॉज ईरान भी इवेंचुअली एट द एंड दैट्स व्हाट दे रियली वांटेड, दूसरे दूसरे को ताकि एंगेज हो जाए सब लोग. तो ठीक है, दे आर नॉट मतलब ट्रैप नहीं हो रही इस चीज़ में, विच इज़ अ गुड साइन. और मेरा ये कहना है कि पावर actually holds a lot, and national security should be your at your peak for the nation. So goodbye.